is of this type of tissue is a muscle fiber or called as myocyte. ठीक है जी, इसको define किस तरह करेंगे कि a muscle is a band or bundle of fibrous tissue. ठीक है जी, होंगे कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी में भी हो सकते हैं, एनिमल में भी हो सकते हैं। और करेंगे क्या? मूवमेंट करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। फिर पोस्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन करने के लिए भी मसल से इन्वॉल्व होंगे। सो मसल इज डिफाइंड एज a band or bundle of fibrous tissue, can be in the human body or the animal body, with the ability to contract, produce movement and maintain the posture of the body. अच्छा जी, फंक्शंस क्या होंगे मसल्स के इन जनरल के? हम क्या क्या आगे को पूछता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मसल्स, तो वो कौन कौन से होंगे? एक प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट को प्रोड्यूस करना, स्टार्ट करना, ठीक है, एंड दैट इज बाय द कॉन्ट्रैक्शन। फिर पोस्चर ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना है, स्टेबलाइज करना है, दैट इज अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। फिर जनरेशन ऑफ बॉडी हीट, दैट इज बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड शिवरिंग, ठीक है, कि वॉलंटरीली भी होगा और इनवॉलंटरी भी होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट विल लीड टू द जनरेशन ऑफ हीट इन द ह्यूमन बॉडी। शिवरिंग जब होती है, सो दैट लीड्स टू द राइज इन द बॉडी टेम्परेचर बाय वॉलंटरी एंड इन एडिशनल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। अच्छा जी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए मसल के? क्या क्या फीचर्स होंगे किसी टिश्यू में तो हम उसको मसल कहेंगे? दैट कैन बी एक्साइटेबल, इसका मतलब ये कि नर्व इम्पल्स जब आएगी, कुछ स्टिमुलस मिलेगा, तो उससे मसल को उस टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर स्टिमुलस पे भी कोई उसमें मूवमेंट नहीं आ रही, चेंज नहीं आ रही, तो उसको मसल नहीं कह सकते, ठीक है जी। उसके बाद दैट हैज द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स हो जाए, ठीक है। फिर एक्सटेंसिबिलिटी, कि जिस वक्त मसल पे कोई प्रेशर या फोर्स आती है, so it extends to some extent but without the damage to the fibers or the architecture. And then elasticity, that after performing its action or function, it will return back to its normal position. Okay, so these are the 4 features that must be present in a tissue to call it as muscle. But muscles को depending on their histological appearance multiple categories में divide करते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या होंगी? अच्छा जी, अगर इसमें कोई स्ट्राइएशन नजर नहीं आ रही तो वो स्मूथ मसल हो जाएगा। Skeletal और cardiac दोनों जो हैं, they fall under the category of striated. The skeletal muscle is concerned for the production of movement which are under voluntary control, and the cardiac muscles are only related or limited to the heart. The cardiac muscles are not found in any other part of the body. अच्छा जी, उसके बाद स्मूथ मसल, ये वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग द अपीयरेंस। हिस्टोलॉजी में भी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे एंड इन जनरल एनाटॉमी एज वेल। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथ मसल की, ठीक है। स्मूथ मसल को हम स्मूथ क्यों कहते हैं? कि बिकॉज दैट अपीयरेंस इज नॉन स्ट्राइटेड। शेप क्या होगी? आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ा हुआ है। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, ये फ्यूजिफॉर्म शेप। और ये शेप होती क्या है? दैट हैज द टिपरिंग एंड्स एंड सेंट्रल डायलेटेड एरिया। So the two tapering end and the central dilated part is called the fusiform shape. The location of the nucleus would be in the center of the cell, and there will be only one nucleus per cell in the smooth muscle.
Here, this muscle has to contract. So the contractile unit or this basic component that leads to the contraction is the sarcoplasm. Cytoplasm of the muscle is called the cytoplasm in these muscle cell is called sarcoplasm. Okay? The sarcoplasm is arranged longitudinally along the length of the muscle cell, and it has the fibers with the ability to contract. Okay? These are the small muscles, so there will be myofilament instead of actin and myosin. As it, they are myofilaments, not the actin and myosin. Okay, and the specific features regarding the smooth muscle that they remain in partial state of contraction. Skeletal muscle can be either fully relaxed or partially contracted, but the smooth muscles will remain in the partial state of contraction. Okay. Another feature of these muscles is that these muscles do not get fatigued. Anaerobic respiration, that is not the feature of the muscle. And these have no bony attachment. So they will be present in the wall of the viscerus. And whereas these small muscles can be present. And the ureter, tubular organs itne ho jayenge, viscerals ho jayenge, which have the ability to contract. Okay. And hence, because they are the involuntary muscles, so they should be innervated by somatic nerve or autonomic nerves. Autonomic. ठीक है? अगर बेसिक एग्जांपल करते हैं तो जो pupil के muscles हैं, they contract and relax according to the circumstances and situation. So उसकी वजह से भी that are the small muscles arranged circularly and are under involuntary control. Sir, erector pili muscles. जी. Erector pili muscles भी smooth muscles होंगे. Erector pili are again smooth muscles. All those muscles which do not have any bony attachment and are involuntary, except the cardiac, are the smooth muscles. Spindle shaped होंगे, single nucleated होंगे, tapering ends with the central dilated area. ठीक है? So this is the fusiform shape. On the left side you see the muscle in the relaxed form, and on the right side you see in the contracted form. An important feature regarding this smooth muscle that the contractile unit fibrils are arranged obliquely. They are not horizontal to the length of the muscle fiber as seen in the skeletal muscle. So here you can see these are the thick filaments and thin filaments which are attached obliquely, and they are attached to the margins of the cell membrane, and these are the obliquely arranged contractile units. Okay, and the point of attachment on the cell membrane in smooth muscles specifically are the dense bodies. We will be seeing what are the dense bodies and what the function. When these fibers contract, the thickness increases or decreases. When smooth muscles contract, they will decrease in thickness and increase the lumen of the structure they are in. And when they relax, they increase in diameter and reduce the lumen of the tubular organ or the viscera they are forming wall of. Clear so far? Sir, ये last question. Okay. Okay. In skeletal muscle, we will be seeing when the muscle contracts, the length of the cell decreases and thickness increases. Because these fibers are parallelly arranged, thickness will not be as much increased, but the length would decrease because of this sliding mechanism. Whereas for the smooth muscle, when these fibers are arranged obliquely, which are the contractile units. So when they contract, they increase the thickness, and when these fibers relax, the middle portion thickness increases. So dense bodies are the areas or the attachment point at which these contractile units are attached to,
on the cell membrane of the smooth muscles. There can be membrane associated dense bodies, and they can be also present in the cytoplasm of the cell, but they are in very less in number. You can recall from your previous knowledge that in skeletal muscle, the basic unit was a sarcomere, starting from one Z line to the other. Between the two Z lines, this basic unit was the sarcomere. But in smooth muscle, there is no sarcomere as such, and the fibers are obliquely arranged, attached to the dense bodies. So these dense bodies in smooth muscle act as Z lines similar to those of the striated muscle. The protein is the alpha actinin, and thin and intermediate filaments are attached to it. Skeletal muscle Pyrimidine protein will be seen in the blood vessels, smooth muscle. Rest smooth muscles will have the desmin protein. So, can anyone tell? Mainly, you will be studying it in the physiology, the mechanism of muscle contraction. So, in smooth muscles, how the muscles would contract? Anyone? That in any case, the muscle contraction is stimulated or initiated by the calcium influx after the nerve impulse, right? So, influx of the calcium leads to the activation of the contractile unit. Myosin and actin will interact with one another when they lie, and the required change is that it must be myosin is phosphorylated. Phosphorus is attached to these myosin chains. Then the light chain activation is by the kinase enzyme, which phosphorylates PKG. And for this enzyme to act, calcium calmodulin complex is required. सर इसकी समझ नहीं आई कैल्शियम calmodulin complex. Okay, that is a calmodulin is again a protein. When the calcium gets bound to it, it will lead to the phosphorylation and activation of contractile mechanism of the smooth muscles. When we were talking about the skeletal muscles, so there are the muscle triad having T-tubule and the sarcomere on both sides, and the calcium attaches to the actin myosin filaments. So for the smooth muscles, the calcium calmodulin complex is required for the initiation of muscle contraction. Smooth muscles, as we said, are not attached to any bone, so they will be present in the form of sheet or circularly arranged or longitudinally arranged. They can be found in the blood vessels, intestine, ureter, pupil में iris से हमने बात की. Iris of the eye has the smooth muscles, and the pupil is the central space or gap between the iris. When we are talking about the skeletal muscle or striated, what features you know about it? Skeletal muscles, striated, non-striated. Striated. Voluntary muscles. Striated. Voluntary or involuntary? Voluntary. Voluntary. Number of nuclei? Poly. Multiple. Multinucleated. So, can anyone think about almost all the cells of the body you have studied, they are uninucleated. But why would the skeletal muscle would be multinucleated? सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा.
in every cell of the human body there is only a single nucleus, but for skeletal muscle we are saying it as multinucleated. Why? सर इसकी रीजन ये है कि बिकॉज स्केलेटल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नंबर ऑफ मायोसाइट्स इंक्रीज नहीं करते बल्कि इनकी लेंथ बढ़ जाती है. इनकी लेंथ 30 सेंटीमीटर तक जा सकती है. क्योंकि ये लेंथ बड़ी है तो न्यूक्लियस ज्यादा होने चाहिए. इस वजह से जो स्केलेटल मसल्स फाइबर्स एंड ये पॉलीन्यूक्लिएटेड होते हैं. We have studied that one cell has one nucleus. Either its length is increased, thickness is increased, or not, hypertrophy, hyperplasia, but the number of the cells remain the same. But why it would be multinucleated? Okay. Keep this point noted. We will be discussing it. The thickness of the skeletal muscle ranges from 10 to 100 micrometers, and the length of the muscle fiber is highly variable. It can be in millimeters for short muscles, and it can go up to centimeters in the larger muscles. Now, we will discuss why it is, and one more thing, what would be the location of these nuclei? Smooth muscle we said in the center. For skeletal muscle, in skeletal muscle, just beneath the sarcolemma. Right, in the periphery, and that is called the subsarcolemmal nucleus or subsarcolemmal arrangement. Now, we see why these are multinucleated. When the muscle cells are originating from the mesenchymal cells, many mononuclear cells are the myoblast. Myoblast would mean the blast cells which are meant for the formation or development of muscle. So multiple myoblasts fuse together fuse or merge together in a long tubular structures which are called the myotubules, and later these myotubules merge to form a long cylindrical chain, and this would be a single muscle fiber. Because multiple myoblasts fuse to form a skeletal muscle fiber elongates by the fusion of the myotubes. Okay, so this would lead to be multinucleated. Multiple myoblasts fuse together to form the long cylindrical channels or tubes or the fibers. That is why these are multinucleated. And this is a specific characteristic limited to the skeletal muscle. Merging of elongated mononuclear cells or the myoblast that forms the myotubes, okay, and the myotubes further merge to form the myofibers or the muscle cells, okay, nuclei at the surface, and the myofibrils are present inside. Myofibrils are the contractile unit that would be further developing into the actin and myosin. Sarcolemma is the membrane of the muscle fiber. Sarcocytes. Cell membrane of the muscle cell is called sarcolemma. Okay, and the striated appearance under microscope is because of their light and dark chains or the thin and thick filaments, where this actin and myosin filaments arrangement. What gives the color to these muscle fiber? You must have heard red meat, white meat. Myoglobin. That is dependent on the concentration of myoglobin. If there is more concentration of myoglobin in mitochondria, that would be appearing more reddish as compared to the one which has the lesser concentration of myoglobin, and the mitochondria helps in its contraction. So there would be two types of fibers, red fibers and white fibers.
kg, or the quick fibers and the slow fibers. The quick fibers have higher concentration of myoglobin, but they quickly fatigue and present in the upper layer, upper part or the upper area of the muscle. And the slow contracting fibers or slow fibers are more resistant to being fatigued, and they are present in the deeper part of the muscle. And as skeletal muscles are voluntary, so they will be innervated by Somatic fibers. somatic nerves, which has the motor component that would lead to its contraction. Okay, and if the muscle is devoid or the innervation of the muscle is damaged, it cannot. We are talking about the skeletal muscle or the voluntary muscle. If its innervation is damaged or denervated, the muscle cell cannot contract, and that is called paralyzed muscle. And when it is not used or contraction is not occurring, it will lead to the atrophy of the muscle fibers. जी सर अभी हम बात कर रहे हैं कि जब मसल डीइनर्वेटेड हो जाएगा तो उसकी एट्रोफी हो जाएगी। जी लेकिन सर जब हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं सेरेटस इंटीरियर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज हो गया, सेरेटस इंटीरियर की एट्रोफी हो जाएगी। तो किस तरह जो इंफीरियर एंगल एंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला प्रोमिनेंट होगा? अगर एट्रोफी हो जाएगी तो उसको मजीद अंदर की तरफ चले जाना चाहिए, स्कैपुला अंदर की तरफ चले जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो बाहर की तरफ आ जाए। The reason for this, when the long thoracic nerve is damaged, the muscle that is the serratus anterior that would be paralyzed. Okay, what is the attachment of serratus anterior? On the costal surface of the scapula, medial side. On the ventral aspect of the medial border of scapula. Okay, this muscle is not acting at all. The prominence of the medial border is by the unopposed contraction of the muscles which are attached to the posterior aspect of the medial border, which were levator scapulae, rhomboid major and rhomboid minor. When these muscles contract unopposed, so they will make the scapula more prominent as compared to the normal conditions. ठीक है, so इसमें serratus anterior का कोई role नहीं है, that is paralyzed, and later on it will be. अब ये चीज भी नहीं है कि जी अभी nerve damage हुई है and at the same moment the muscle atrophies or dies out. When you studied the ape-like hand in the upper limb due to the injury of the median nerve, या cubital tunnel syndrome, that was a gradual development. Gradually the muscle atrophies and degenerates. It cannot be degenerated in minutes, right? So the prominence of the medial border is by the contraction of the muscles of posterior aspect of medial border, levator scapulae, rhomboid major and rhomboid minor. So the basic contractile unit, G, is it clear now? Yes, sir. Thank you, Okay. sir. Achha ji. Now we are. What is the basic contractile unit of a skeletal muscle? Sarcomere. Sarcomere. Sarcomere has a thick and thin filaments which are the actin and the myosin. So they are overlapping to one another. ये बेसिक आप हिस्टोलॉजी में इसकी डिटेल करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए इसको हम कर लेते हैं कि from one Z line or Z disc to the other is the sarcomere, this region. It has further different appearing areas under microscope, which are called this area, which is light pink and does not has any thick filament, is the I band. I band. I stands for isotropic. ठीक है, homogeneous or isotropic. Then is the A band, which is having both actin as well as the myosin filaments. So A would stand for anisotropic, which is non-homogeneous. In the A band, there is certain area in the relaxed form in which there is only
the thick myosin filaments and no thin filament. That is called the H zone. The central part of the H zone is the M line. Clear so far? The limiting margin is the Z disc to which the actin and myosins are attached. I band is the isotropic region having only actin filaments, or the elastic actin filaments and the elastic titin filaments, which are homogeneous. A band is an isotropic having actin and myosin filaments. Each zone is the one which is only having the thick filaments, and M line is the central part of the central disc of the sarcomere. When these skeletal muscles contract, the length of the actin and myosin filaments remains the same, whereas these two slide over one another. So after contraction, क्या changes आ जाएंगे? The I band would disappear. The actin and myosin filaments would slide over one another, and the length of the sarcomere would decrease. At the end, we will be seeing a video that shows the contraction or the sliding mechanism of muscle contraction. This is the slide of cardiac muscle, skeletal or smooth? Skeletal. Skeletal muscle, striated appearance है, multinucleated है, and the nuclei are located in the subsarcolemmal region. This is the cross section. They are the peripherally located nuclei, not in the center. Then we briefly talk about the cardiac muscles. So the cardiac muscles are also under the striated appearance category, but these are under involuntary control. They are not voluntarily controlled. ठीक है? So ये एक important चीज आ गई कि जी smooth muscle हमने कहा था totally involuntary and non-striated है. Cardiac muscles are striated but non-voluntary or involuntary. Okay? अब हमने एक बात ये कर दी कि जी for skeletal muscle there was sarcomere connected or limited by the two Z lines. Here the muscle fibers would be connected to one another by a specialized mode or specialized mechanism, that is an intercalated disc that connects the muscle fibers, and the cardiac muscle has the additional property of being a branching fibers. Smooth muscles and the skeletal muscles are the non-branching ones. Regarding the properties, the smooth muscles are, or the cardiac muscle nucleus would be single or multiple? Single. Single nucleus, location would be in the center oval. Smooth muscle also has the single oval nucleus. Cardiac muscle has also single oval central nucleus. Sarcolemma is the cell membrane present outside, and that has the conductive system of the heart that controls the contraction of these muscles. So when we talk about the intercalated disc, detail would be in histology, but a brief overview that the intercalated disc has the step ladder pattern, having the horizontal part and the vertical part. So, सर जी सर एक बात हिस्टोलॉजी में समझ नहीं आई थी कि गैप जंक्शंस आर एब्सेंट इन द स्केलेटल मसल फाइबर्स. सर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? Okay. Gap junctions का काम क्या है? What is the function of gap junctions? So movement of ions, water molecules, communication. Communication. ठीक है. So for skeletal muscle, there is no need of communication of ions between the muscle fibers. Each muscle has to contract independently, and that would be depending on the release of calcium by the T-tubules. So that would not be requiring the
gap junctions to communicate between the muscle fibers because each muscle fiber is an independent unit. For the cardiac muscle, they are interconnected to one another with the branching fibers and they are interconnected to each other. And यहाँ पे डाइएट होगा ट्राइएट होगा muscle Triad. striate for the cardiac muscle. समझ नहीं आई आपने क्या कहा As a diet, T-tubule and the sarcomere on one side. So that would be requiring some mechanism by which the ions are propagated from one cell to the other. So that is the requirement of the gap junction in the cardiac muscle and is not required in the skeletal muscle. So the step-ladder pattern, and it has the horizontal component and the vertical component. The horizontal component has the gap junctions which help in the diffusion of ions, and the vertical portion would be having desmosomes which are connecting one cell or one muscle fiber to the other. The step-like junction, step-ladder pattern is having vertical and the horizontal components. What is fascial adherence and the macular adherence? Adherence was the tight junctions or the gap junctions? Anchoring junction. Anchoring junctions or the tight junctions. Okay. So here you can, these lightly colored pink areas are the intercalated discs which are connecting one muscle fiber to the other. अच्छा जी. हमने ये बात कह दी कि depending on the concentration of the myoglobin, these are categorized as white. जी. सर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरकलेटेड डिस्क का समझ नहीं आई. Okay. जो muscle connection है between the cardiac muscle fibers which when they are connected to one another, ठीक है, so there is not a straight attachment, that is a zigzag pattern. So this horizontal area, let me draw if I can. This horizontal area, you can see in the video that there is a horizontal and the vertical. The horizontal are connecting one muscle fiber to the other, my left hand, and it will be having the gap junctions for ion transport. Whereas the vertical portion or the ascending portion is the one which is connecting it with the or binding it with the neighboring cell, and that would have the desmosomes in it for connection. So quickly, cell membrane on the muscle cell is the sarcolemma. Cytoplasm of these muscle is called the sarcoplasm. And the endoplasmic reticulum in the muscle is called the sarcoplasmic reticulum. अच्छा जी. Big coverings होंगी. There would be multiple coverings stepwise starting from the muscle cell या muscle fiber to the outside the complete muscle. So epimysium is a sheet of connective tissue that is surrounding the whole muscle. Perimysium, that would be around the bundle, smaller septa which are around the bundle, and endomysium would be around the single muscle fiber. So here you can see, starting from the center, this is a single muscle fiber, and the connective tissue covering around it would be endomysium. Endo is for innermost and mysium is for muscle. Then around the bundle of muscle fibers, there will be perimysium. And outside the complete muscle, there would be epimysium. Epimysium. So now we are moving on to the classification area. Okay.
अच्छा जी, कि मसल्स के अटैचमेंट की अगर आप बात करते हो, सो इट मसल्स कैन बी अटैच्ड डायरेक्टली टू द बोन्स, इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, ठीक है, to the skin with the help of aponeurosis. So to the directly attachment to the bone would be epimysium is continuous with the periosteum of the bone. Intercostal muscles example एक आ गई. To bone indirectly, epimysium continues as tendon that merges with the periosteum of the bone. जैसे आपने टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई की इंसर्शन देखी, ठीक है जी. फिर फेशिया और द टेंडन टू अनदर मसल, आपस में दो मसल्स मर्ज करके इकट्ठे इंसर्ट करेंगे. ऑरिजिन की बात करते थे हमने टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और साथ में कोरेकोब्रेकियालिस का कंबाइंड ऑरिजिन था, ठीक है जी. फिर कोलेजन फाइबर्स टू द डर्मिस, एक फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स आएंगे. इसी तरह आपने पाम में पाल्मेरिस ब्रेविस पढ़ा, ठीक है. लीनियर एल्बा जो है मसल मसल से भी अटैच है. ये दो मसल्स का मसल टू मसल अटैचमेंट है कि लोअर लिम्ब में आप ज्यादा पढ़ोगे. जैसे टेंडन ऑफ एचिलिस का अगर नाम सुना हो, they are the three muscle fibers muscles which are attached connectively to the heel bone. इसी तरह अगर आप याद कर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से भी तो सर मसल्स निकलते हैं, लंब्राइकल्स. जी बिल्कुल, वो भी मसल टू मसल कनेक्शन में. बिल्कुल, वो भी बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि टू मसल टेंडन्स कंबाइन टू बी अटैच्ड एट द सेम पॉइंट. क्लासिफाई में करना है मसल्स को डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप्स. प्राइम मूवर क्या होंगे? जो मूवमेंट को स्टार्ट करवाते हैं. For flexion at the elbow joint, brachialis is the prime mover, assisted by biceps brachii and brachioradialis. ठीक है. इसी तरह synergistic वो होंगे जो प्राइम मूवर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने असिस्टिंग से बात की, बाइसेप्स ब्रेकाई भी और साथ में ब्रेकियोरेडियलिस भी. एंड होगा जो मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप, ठीक है. फिर उसके बाद फिक्सेटर्स होंगे कि कुछ मसल एक बोन को एक स्पेसिफिक एरिया पे फिक्स करें ताकि दूसरे एंड पे मूवमेंट हो सके, ठीक है. जैसे एल्बो फ्लेक्शन की अगर आप बात करते हो तो उसमें ट्राइसेप्स उसको फिक्स कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ब्रेकियालिस इज फ्लेक्सिंग द जॉइंट, ठीक है. इसलिए रोम्बस जो दे होल्ड द स्कैपुला इन प्लेस ताकि अपर लिम्ब की मूवमेंट पॉसिबल हो सके या रोटेशन ऑफ द स्कैपुला हो सके, ठीक है जी. रोम्बस का अगर आप देखते हो कि दीज आर कनेक्टिंग इट टू द वर्टिब्रल कॉलम and they will help in the scapula to rotate. जी. उसके बाद अब एक चीज जो थोड़ी सी इंटरचेंजेबल टर्म है, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि ऑरिजिन और इंसर्शन क्या होता है, किस बेस से हम कहते हैं कि मसल तो दोनों तरफ टेंडन के थ्रू बोन से अटैच्ड है, तो इसमें हम ऑरिजिन किस बेस पे कहेंगे, इंसर्शन किस बेस पे कहेंगे. द पार्ट ऑफ द मसल दैट इज अटैच्ड. जी सर, ये इस तरह कहते हैं कि अगर हम पेक्टोरल गर्डल में होंगे तो पेक्टोरल गर्डल के जो चीज करीब होगी उसको आप ओरिजिन कह देंगे. अगर आप पेल्विक गर्डल में होंगे तो जो चीज टेंडन करीब होगा तो उसको आप ओरिजिन कह देंगे. एनीवन एल्स? आपने अच्छा याद रखना है कि ओरिजिन हम उस पॉइंट को कहेंगे जहां पे एज सच मूवमेंट नहीं हो रही है फिक्स्ड एरिया, ठीक है, और जहां पे मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज द इंसर्शन पॉइंट. अगर हम बाइसेप्स ब्रेकाई की बात करते हैं तो स्कैपुला पे इसकी अटैचमेंट है जहां पे बाइसेप्स ने मूवमेंट नहीं करवानी है, सो दैट वुड बी इट्स ओरिजिन पॉइंट. और इंसर्शन जाके इसकी हो रही है अल्ना पे, अल्ना टिब्रोसिटी पे, सो दैट वुड बी द डिस्टल इंसर्शन पार्ट, ठीक है. सो जहां पे मूवमेंट मसल नहीं करवा रहा वो उसका ओरिजिन पॉइंट होगा, और जहां पे मूवमेंट करवा रहा है दैट वुड बी इट्स इंसर्शन पॉइंट. इस तरह अगर ट्राइसेप्स की बात करते हो
सो स्कैपुला पे भी ट्राइसेप ने ऐसे मूवमेंट नहीं करवानी, हिमरस पे मूवमेंट नहीं करवानी. So that would be its origin, and its insertion is to the posterior aspect of ulna. So that would be its distal attachment or insertion. फिर मसल्स को हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स एंड अपीयरेंस. ठीक है, अगर फ्यूजिफॉर्म होगा कि सेंट्रल डायलेटेड बेली है और साइड पे टेंडन आ रही हैं, तो दैट इज द फ्यूजिफॉर्म मसल. एग्जांपल इज बाइसेप्स ब्रेकाई. ठीक है जी. उसके बाद पैरेलली अरेंज्ड मसल होगा, सो दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस. एब्स जो कहते हैं दैट इज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल. ठीक है, फिर इसी तरह फिर आता है पेक्टोरलिस मेजर. वो किस तरह के ओरिजिन इसका वाइड था. पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन कहाँ से था. Scapula, sternum से clavicular part, स्टर्नम से, क्लेविकल से और अपर सेक्स रिब से. ठीक है, सो एक वाइड एरिया से उसका ओरिजिन है और जाके इंसर्शन उसकी हो रही है इन द फ्लोर ऑफ एसिडल ग्रुप ये ग्रेटर ट्यूबरकल पे. lateral lip, intertubercular. lateral lip of the circles. ग्रेटर ट्यूबरकल में इंसर्ट होता है. सो वाइड ओरिजिन है और जाके सिंगल पॉइंट इंसर्शन है, सो दैट इज कन्वर्जिंग. सो दैट इज एग्जांपल इज पेक्टोरलिस मेजर. डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स अराउंड द इंसर्शन पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है. क्या आपने परिंदों के पर देखे हैं. Yes sir. उसमें बर्ड फेदर में क्या होता है कि देयर इज अ सेंट्रल वाइड एरिया अराउंड व्हिच द फाइबर्स आर अटैच्ड. ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन इट्स अरेंजमेंट दे आर गिवन द नेम. इफ ऑल द मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड attached to one side, that is unipinnate. अच्छा जी, कि अगर fibers are attached to one side of the central axis, that is unipinnate. palmar interosseous की बात की थी. फिर बाइपिनेट कौन से होंगे. फाइबर्स आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल एक्सिस. रेक्टस फेमरस आएगा लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में आ जाएगा डॉर्सल इंटरओशियाई दैट वर हैविंग डबल अटैचमेंट. देन द मल्टीपिनेट में आ जाएगा दे आर मल्टीपल फेदर लाइक अरेंजमेंट दैट इज द डेल्टॉइड. फिर सर्कुलरली अरेंज मसल आएंगे दैट इज द स्फिंक्टर लाइक ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली आ जाएगा. बाकी स्फिंक्टर्स जितने आ जाएंगे दे आर ऑल सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल्स. ठीक है, फिर उसके बाद क्रूशिएट या क्रॉसिंग फाइबर्स होंगे. वो उसकी कोई एग्जांपल अगर आपको पता हो. अच्छा, स्टेर्नोक्लीड और मेस्टर्न मसल का नाम सुना है आपने. Yes. Yes sir. That is Yes, sir. that is obliquely arranged strap muscle. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पे आगे हम देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर को कि इसका वाइड ऑरिजिन था एंड द नियर इट्स इंसर्शन इट कन्वर्जेस टू अ सिंगल पॉइंट. सो दैट इज अ कन्वर्जेंट टाइप ऑफ मसल दैट इज पेक्टोरलिस मेजर. The strap muscle which are horizontally arranged या parallelly arranged fibers मैंने बात की rectus abdominis की. ये एग्जांपल आ जाएगी. पेनेट हमने कहा कि फेदर शेप्ड. तो अगर आप यहाँ पे देखते हो palmar interosseae are unipinnate, they are attached to one side of the central axis. और जो dorsal interosseae थे और rectus femoris आएगा that is rectus femoris हम lower limb में पढ़ेंगे. So the fibers are attached on both sides of the central axis. So that is example of bipinnate muscle. Deltoid is an example of multipinnate. ठीक है. फिर अब ये आप लोगों ने बताना है कि ब्लड सप्लाई और मसल कैसे होगी, कहाँ से आएगी. सर जी सर डेल्टॉइड के जो तीनों पार्ट होते हैं वो तीनों जी. मल्टीपिनेट होंगे या सिर्फ. ओके सर. तीनों एरियाज को मिला के हम उसको मल्टीपिनेट कह रहे हैं.
ओके सर। इंटीरियर फाइबर्स भी, मिडल फाइबर्स भी और पोस्टीरियर फाइबर्स सारे मिलके वो मल्टीपिनेट अरेंजमेंट में आ रहे हैं। अच्छा जी, how the blood vessels would enter into these muscles and supply. Anyone? कि जो मसल के अराउंड न्यूरोवास्कुलर बंडल है, that would be giving the branches to be supplying the muscles, ठीक है? And that mostly they enter the muscle through its deep surface और आगे branching होके it supplies the fibers of the muscle. And similarly इसके जो associated होंगी veins that will be accompanying or assisting with the arteries. अच्छा जी, so far or not? क्या आपने जब अपर लिम्ब पढ़ा तो ब्रेकियल आर्टरी की भी मस्कुलर ब्रांचेस का नाम सुना, फिर उसके बाद रेडियल आर्टरी, अलर आर्टरी पढ़ी, they were also giving the muscular branches. So the branches from the neurovascular bundle of this region and enter the muscle through its deep surface. Next drainage will be accompanying the arteries. नर्व सप्लाई कहाँ से आएगी? इनोवेशन सुपरफिशियल सरफेस से, डीप सरफेस से? The nerves would enter the muscle from superficial surface or deep surface. सर हर मसल फाइबर के पास हमने फाइबर देना तो सर डीप Anyone? Deep surface. अच्छा जी, nerves would enter from deep surface or superficial surface. Both. सर both because they're deep muscles, intermediate and superficial muscles. Mostly from the deep surface. ठीक है जी, अच्छा जी. अच्छा जी, और मसल की कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी? अच्छा जी, Yes, sir. कहाँ से कहाँ को ड्रेन करेगी? Regional lymphatic vessels Accompany the होते थे. vein. जी, ठीक हो गया. अच्छा अच्छा, अब एक वीडियो रह गई है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की है, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी थोड़ी देर में ऐड डाल दूंगा. बहुत स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन देख लें. एनी अदर क्वेश्चन डू लेट मी नो. सर लिम्फेटिक्स के बारे में बता दें। जी, सर लिम्फेटिक्स एक बार रिपीट कर दें। जी मैं 1 minute आई विल बी टेलिंग यू. और एक सवाल, अच्छा lymphatic हैं कि they are formed from the interstitial fluid among the muscle fibers. They are collected and are drained towards the regional lymph vessels leading to the lymph nodes near them.
सर जी सर साइनेप्स को हम कहते हैं दैट इज अ गैप जंक्शन। जी सर बिल्कुल। गैप जंक्शन में हमने पढ़ा कनेक्सॉन चैनल्स होते हैं, ऐसा साइनेप्स में तो नहीं होता, वो तो एक क्लेफ्ट होती है। Synapse और गैप जंक्शन दो फर्क चीजें। Synapse is a gap or the space between the two nerve endings, ठीक है। रिसेप्टर और इफेक्टर के दरमियान में गैप है, that is not a gap junction, that is the space or the cleft between the two surfaces. So there is a difference between the gap junction and the synapse gap. Inshallah, in the next lecture we will be जी सर ये एक सर सेलुलर जंक्शन इन कार्डियक मसल, सर दोबारा बताएं। kindly note these questions, and inshallah in the next lecture we will be discussing these first and then continue with the next. ओके सर, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz.